और इनकी अगर स्पीच की बात करें बहुत ही डीप वर्ड्स थे एंड दिल को टच किया, हार्ट। उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्तों। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी। बहुत से सब्सक्राइबर मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बीटीएस भाई यूनाइटेड नेशन में उनकी स्पीच हुई है, उनकी वीडियो लेकर आओ, तो फाइनली लेकर आ गए हैं। बड़ी जबरदस्त वीडियो होगी, ऑनरेबल वीडियो है एंड रिस्पेक्टेबल वीडियो है। बड़े ही रिएक्शन हो गए एंड पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums
and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I'd like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. वाह, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। सच में ऑनर फील हो रहा है मुझे यार बीटीएस के ऊपर। यूनाइटेड नेशन के अंदर वो स्पीच कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया, और क्या ही इन्होंने सूट यहाँ पे पहने थे यार। इनकी पर्सनैलिटी की बात करें, लाइक आप जिस तरह से एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल। और मैं अक्सर ये देखता था तो मुझे बड़ी मतलब कि होता था कि मैं देखता था यार काश मुझे ये स्पीच देखने को मिलती। और इसमें जो उनसे आरएम ने स्पीच की है ना, वो अक्सर रील में आता था, वीडियो में आता है कि आई एम किम नामजोन। हाँ, स्टार में उन्होंने बोला, तो यही है, बहुत ही ज्यादा यार यही थी स्पीच जो कि अलग और नेक्स्ट लेवल की जाके स्पीच की। और इनकी अगर स्पीच की बात करें, बहुत ही डीप वर्ड्स थे एंड दिल को टच किया, हार्ट। उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई है कि हम अपनी जो कला है, हम जो आर्टिस्ट हैं, हम अपनी कला अपनी आवाज़ के ज़रिए से जो है ना प्रोनाउंसिएट करते हैं सभी को। और एक ऐसे आर्टिस्ट हैं साउथ कोरिया के अंदर जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और इनका लव योर सेल्फ एल्बम जो उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा हिट है और इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो डिमोटिवेट होते हैं लाइफ में। और क्या ही हम भी सुनते हैं इनकी सॉन्ग्स, हमें बहुत अच्छा लगता है। और बीटीएस का जितना क्रेज है ना अभी मुझे पता लगा। हाँ, और जितनी आरएम ने भाई यूनाइटेड नेशन अच्छी की है तो मैं कहता हूँ धूम मच गई होगी यार। और आरएम ने कहा कि ड्रीम था मुझे कि मैं सुपर हीरो बनूं, और वाकई आज लोगों के लिए वो सुपर हीरो बिल्कुल ऐसे ही है यार। जिस तरह से वो कह नहीं रहा कि मैं एक छोटा सा साउल के इलाका से पैदा हुआ वहाँ पे साउथ कोरिया में, एंड क्या ही देखें 7 मेंबर्स एक गोस्ट की तरह पूरी छाया जो भी है भाई। आप जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आई थिंक से या आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे कि एक अलग ही लेवल होगा इनका। अभी भी है, अभी तो ये मिलिट्री में है, बिकॉज हमें लाइव कभी देखे नहीं इनको, अभी ये ओल्ड वीडियोस हैं। और जितनी भी ओल्ड वीडियोस देख रहे हैं हमें सच में इंस्पिरेशन मिल रही हैं। और सच में ये स्पीच ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और अपनी फीलिंग्स जो कुछ लोग होते हैं कि अपने पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने पास्ट को भी प्रेजेंट किया है कि भाई मैं इस इलाके से आया हूं। क्या उन्होंने उस इलाके की छोटे से टाउन से आए हैं, तारीफ भी की है कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा लेक भी थी यार, टू मच यार, वाओ, बहुत ही अच्छी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। एंड बाकी मेंबर्स की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट और हम्बल में यहाँ पे दिखने को मिले। एंड वो जिस तरह से आरएम को आगे किया हुआ ना, तो आरएम भी भाई उनको जो है ना मेंबर्स बता रहा है और उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। कहा कि मुझे मेरे हम एक सपोर्ट है, लव एंड सपोर्ट है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है भाई, यूनिटी, जो कि एक इंसान को, एक ग्रुप को आगे लेके आती है। ठीक है ना, आप जंगल में कहीं खो जाओ ना, अगर आपके अंदर यूनिटी है ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल थी मैंने आपको दी। तो खैर बहुत ही अच्छा वीडियो था, हमें बहुत अच्छा लगा जी। और इनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, बहुत ही जेंटलमैन यहाँ दिखने को हमें मिले और सच में बहुत इंस्पायरेबल स्पीच थी आरएम। तो सो दिस इज द एंड वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।